Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English grammar for class 7 and this is lecture number 34. My dear students, today we will learn past perfect continuous tense. Now let's see its definition, formation and example. The definition of past perfect continuous is: the past perfect continuous tense shows that an action that started in the past continued up until another action in the past. ठीक है बेटा, ऐसा कोई भी काम जो माजी में एक किसी ख़ास टाइम से शुरू हुआ और वो जारी रहा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं बताया कि कब से सो रहा था. लेकिन अगर इसमें मैं यूँ बताऊँ कि वो शाम से सो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इसका स्टार्टिंग टाइम बताया और फिर एक्शन हमारा कंटिन्यू रहा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो क्या होगा, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग. ठीक है, उसी तरह मैं आपसे कहूँ बारिश हो रही थी, तो आप कहेंगे इट वॉज रेनिंग. लेकिन मैं कहूँ कि 2 घंटे से बारिश हो रही थी, 3 घंटे से बारिश हो रही थी, तो अब आप इसको पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहेंगे. कैसे? इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं. We form past perfect continuous tense with a subject plus had been. It's auxiliary verb of past perfect continuous tense. ठीक है, past perfect continuous tense का जो auxiliary verb है वो क्या है, had been. उसके बाद present participle means fourth form of the verb, ing form of the verb, then object और फिर since और for. And you know very well when we use since and when we use for. ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हमने पहले भी पढ़ा था since और for को कब यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Affirmative sentence. Ali had been helping him since Monday. Sana had been sleeping for 2 hours. And how we can make the negative of these sentences? by just putting the not after had. ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेंगे, हमें had के बाद not लगा देना. नेगेटिव sentences: Ali had not been helping him since Monday. Sana had not been sleeping for 2 hours. ठीक है, और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आपको पता है कि वी स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो हम इसमें हैड से सेंटेंस को शुरू करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर बीन. ओके, हैड अली बीन helping him since Monday. Had Sana been sleeping for 2 hours. And we put question mark at the end of the sentences. ठीक है, so that's how you have learned affirmative, negative and interrogative sentences of past perfect continuous tense. Now take out your grammar books and open page number 26 for exercise A. Exercise A on page number 26. Fill in the blanks with correct form of the verbs to make past perfect continuous tense. ठीक है, तो बेटा हमें correct form of the verb use करनी है, and we know in past perfect continuous tense we use fourth form of the verb. Present participle form of the verb हम use करते हैं ing form. ठीक है, और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं हैड बीन. द फर्स्ट वन, वी डैश स्टडी इंग्लिश फॉर 1 year. सो क्या होगा, वी हैड बीन
studying English for 1 year. Next we have the police dash chased the gangster for 2 days. The police had been chasing the gangster for 2 days. Number 3, Ahmad dash knock at the door for half an hour. Ahmad had been knocking at the door for half an hour. Number 4, Rashid dash drive the car since night. Mr. Rashid had been driving the car since night. Number 5, the patient dash waiting for the doctor since night. The patient had been waiting for the doctor since night. Okay, now look at the board for answers. Number 1, had been studying. Number 2, had been chasing. Number 3, had been knocking. Number 4, had been driving. Number 5, had been waiting. Okay? Exercise B and exercise C of this unit will be your homework. ठीक है बेटा, इस यूनिट की एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी आपका होमवर्क है. एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी विल बी योर होमवर्क. ठीक है, बी और सी आपने खुद करनी है. बी में आपने एक में आपने नेगेटिव बनाने हैं, एक में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 27 फॉर एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी, change or translate the following sentences into English. Number 1, मेरी बहन 1 घंटे से कपड़े धो रही थी. ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने इन्हें ट्रांसलेट करना है. तो क्या होगा? My sister had been washing clothes for an hour. नेक्स्ट, दादी अम्मी रात से दुआ मांग रही थीं. ग्रैंडमदर हैड बीन प्रेइंग, कब से? रात से, सिंस नाइट. ग्रैंडमदर हैड बीन प्रेइंग सिंस नाइट. नेक्स्ट, टैंक में पानी की सतह, द वाटर लेवल, टैंक में पानी की सतह शाम से कम हो रही थी. द वाटर लेवल in the tank had been decreasing since evening. The water level in the tank had been decreasing since evening. Number 4, मजदूर 4 माह से इमारत तामीर कर रहे थे. Laborers had been constructing a building for 4 months. And the 5th one is your homework. Now look at the board for answers. Exercise D, translation. Here we have the translated sentences. Number 1, my sister had been washing clothes for an hour. Number 2, grandmother had been praying since night. Number 3, the water level in the tank had been decreasing since evening. Number 4, laborers had been constructing a building for 4 months. And the 5th one is your homework. Okay, that's all for today. We will meet inshallah in the next class. Take very good care of yourself. Assalamu alaikum.